Okay, so the first equation is 2x plus 1 by 7 plus 5y minus 3 by 3 is equal to 12. मैं सेकेंड इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, मैंने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन लिखा है. चलो क्या करूं मैं ऋषि, बताओ मेरे को. ऋषि कहाँ गायब हो गया भाई? सर मैं हूँ. नहीं, तू दिख नहीं रहा है और तेरा आवाज भी नहीं आ रहा है. हाँ, अभी आ रहा है आवाज, लेकिन चलो बताओ ऋषि. एक मिनट, मेरे को स्टार्ट करने दो ये. यस प्लीज टेल मी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई शुड डू? You just have to tell me and I'm going to do it. Okay, so you don't have to write and show me, you just have to tell me, Rishi. Rishi, Sir, we can multiply equation 1 by 3 and equation 2 by 2. no, first you have to take LCM and simplify. ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब फ्रैक्शंस आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, तो पहले तो उसको सिंप्लीफाई करो बाय टेकिंग एलसीएम. ठीक है, सो आई एम 7 and 3 का एलसीएम है 21. आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई the first fraction by 3, the second fraction by 7. So this will become 3 times 2x plus 1 plus 7 times 5y minus 3, the whole upon 21 is equal to 12. So this will become 6x plus 3, 3 2s are 6, okay, 3 1s are 3, plus 35y minus 21 upon 21 is equal to 12. Now shift this 21 to the other side. So here you will be left with 6x plus 35y. 3 minus 21 will be minus 18 is equal to 12 times 21. Rishi, can you tell me what is 12 times 21? जल्दी जल्दी चलो. अरे कोई और बता दो यार. 252. So 6x plus 35y is equal to 252 plus 18. ये minus 18 ये साइड शिफ्ट हो जाएगा. So 6x plus 35y is equal to 252 plus 18, 270. Am I correct? Yes, sir. Very good. So this is equation number 1. समझा ऋषि? हाँ सर. तेरे को आया था ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन? नहीं सर, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था. एलसीएम हाँ नहीं निकाला था. बेटा, यही गलती है. आपको पहले ये इस फॉर्म में लेके आना है. यू नो व्हाट इज दिस फॉर्म? दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैंने बताया था. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल. इस फॉर्म में पहले लेके आओ ना तुम. किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, रिड्यूस करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर उसको सॉल्व करो. सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज एनी मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एनी मेथड.
ठीक है। सो अब ये आगे करने की जरूरत है मुझे सेकंड वाला, या फिर तुम कर लोगे? सर मैं कर लूंगा अब आगे। चलो सही है, सही है, वेरी गुड। किसी और को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, मैंने कैसे किया या फिर आगे कैसे करना है? डज एनीवन हैव एनी डाउट? प्लीज स्पीक अप सो दैट आई कैन एड्रेस योर डाउट। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि डाउट नहीं है। यश, क्या हो गया बेटा? यस सर। तुम्हारा जो पिक्चर दिख रहा है, सर मैं हैंग हो गया, 1 मिनट। तू हैंग हो गया? अच्छा, हैंग मत हो यार। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डाउट। इसमें भी यही किया है क्या तूने, ऋषि? हाँ सर, सारे फ्रैक्शंस में वही कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, अपन पहले इसको किसी के हेल्प से पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर ही लेते हैं, ठीक है। 3x/2 - 5y/3 + 2 = 0। चलो नेक्स्ट अपना कंटेंडर है, हु इज देयर, हु इज देयर? Akshata, can you please help me, Akshata? Can you tell me what needs to be done over here? Yes, Sir, can Akshata. you hear me? Yes, Akshata. What are you telling? Sir, I can't hear anything. You can't hear anything. I can hear you very clearly. Can you hear me now? Akshata, re-log in. Log out and log in again. There is no issue from my side, maybe from your. Re-log in if you can. Yes. Okay. In the meanwhile, I'm going to take help from Sarvik. Sarvik, can you hear me, beta? I can't hear you, beta. Please unmute. You are unmute. I can't hear you, Sarvik. Check your microphone. Sarvik, I can't hear you. Something wrong with your mic. Okay, next we'll go with, let's say, Achal. Can you hear me? Yes, sir. Okay, great. So we can proceed now. Can you tell me कैसे आगे बढ़ना है इसमें? Yes, sir. Sir, I have Yes. actually took the second equation as LCM. Okay, I but have yeah, you changed it. Second, you you have to simplify the first equation as well. So can you tell me how to simplify the first equation? What should I do now? yes, sir. By taking LCM. First thing I think we should do is 3x/2 - 5y/3 is equal to -2. Shift this 2 to the other side. Now LCM. Yes, sir. What is the LCM of 2 and 3? 6, So what should I multiply here 3, and over here? 2. Very good. Okay. 3 3s are 9x minus 5 2s are 10y whole upon 6. 6. Now, We have to shift the 6 towards -2, so it will become, -12. this is equation number 1. Yes, sir. Okay. Quickly help me with the second equation. Sir, LCM is 6. Okay, so 2x plus 3y/6 is equal to, what should I do with this 1/6? 13/6. Yes, we convert it into improper fraction. Now what should we do? This is interesting stuff. Sir, I have actually converted the second statement
as x is equal to 13 minus 3y divided by 2. So I have substituted the value of x in the Oh, first okay. equation. Yeah, you can do that. But the first thing you're going to do here is cut 6. 6 denominator में ना दोनों के इसको cut कर दो सीधा. And then 2x plus 3y is equal to 13 becomes your second equation. Now you can do whatever you want to do. X को subject बनाओ formula का and use substitution or use elimination. Whatever you want to do, you can do now. This is how you simplify it. ठीक है? I'm sure everybody knows this. चलो आगे बढ़ते हैं. I don't even want to discuss this question. It's very easy. ऋषि अब तो कर लोगे तुम. हाँ सर. चलो ठीक है तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. ठीक है ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है. लेट मी राइट द फर्स्ट इक्वेशन. 4x plus x minus y by 8 equals 17. Jia Kala, are you there? Can you hear me? Yes sir. Yes, please help me. How to proceed with this? What should I do with this equation to make simple? So you can add 4x upon 1 the denominator and then we'll take out the LCM. Very nice. What is the LCM? 8. So I So multiply we'll 8 here and 1 here. and 1 more. Yes. Next step, please. Sir, it will be 32x plus x minus y is equal to 17. No, the whole upon 8 beta. Huh. Next step. Then it will be 32x plus x minus y is equal to 17 into 33x, 8. right? Minus, 33x. yeah, is equal Minus to y is 17 equal to times 8. Can you tell me 17 times 8 कितना होता है? 136. 136 you said? हाँ. Equation number 1 ready? Yes. Great. Next equation please. What should I do? Sir, SEM. Of 2x plus 2y plus x. okay, so I should take them together, na? 2y plus Yes, x sir. and their denominator I should make 1. Now tell me. So we'll multiply by 3. Very good. And here 1. 1. Yes. So 3 times 2y plus 2x x plus x. minus 1 bracket 5y 5y plus plus 2 the whole upon 3 3. equals 2. Correct? Yes, sir. Okay. चलो अब कुछ मज़ा आने वाला है. ठीक है अब मेरे को चाहिए कि लेट्स सी कौन है मेरा नया कंटेंडर. वरद. Varad, are you there? Yes, sir. Varad, on your cam. Varad, please on your cam. Sir, I have one minute. No, I can't see you. Anyways, you can hear me, I can hear you. Let's go ahead. बताओ आगे कैसे करेंगे इसको सॉल्व करना है मुझे. Sir, we'll multiply 3 with चलो ना बताओ ना क्या आता है फटाफट. 6. 6 what? 6y plus x minus 6y 5y plus plus what? 2. 6y plus what?
3x हाँ तूने x बोला था, नींद उड़ाओ। हाँ अभी आगे बताओ, चलो जल्दी। minus 5y plus 2. माइनस, 5y minus 2. हाँ पहले प्लस बोला था, अभी भी नींद में। ये these are the things where you can make mistakes, साइंस में, मल्टीप्लिकेशन में, बी वेरी केयरफुल। बाई 3 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप बताओ। Sir, will multiply 3 that side with 2. ओके दैट विल डू। ऊपर बताओ क्या बचेगा, एलएचएस में क्या बचेगा। हम्म, Sir, y plus 3x minus 2. पहले तो 3x लिखना है, ठीक है। फिर 6y माइनस 5y विल बी प्लस वाई, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 6। नेक्स्ट स्टेप बताओ। 3x plus y is equal to 6 plus 2. हम्म, so 3x plus y is equal to 8. This is your equation number 2, which can be solved easily. अच्छा, किसी को सॉल्विंग में इश्यू है क्या? सॉल्विंग में किसी को इश्यू है कि सॉल्व नहीं होता है? यश, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ तो यश, सॉल्व करना आता है तेरे को? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चलो ये वाला हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। ये दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करते हैं। तेरी फेवरेट मेथड कौन सी है? On adding. एडिंग? ये कौन सी मेथड है यार? देख, तीन मेथड है। एक तो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फिर दूसरी मेथड है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तीसरी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Sir, on adding equation 1 and 2. अच्छा, यू वांट मी टू ऐड देम डायरेक्टली बिकॉज द कोएफिशिएंट्स ऑफ y आर इक्वल एंड ऑफ ऑपोजिट साइन, इसके लिए बोल रहे हो क्या? Yes, sir. हाँ तो दिस मेथड विच यू आर सेइंग ना, इट कम्स अंडर द मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। क्योंकि y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, इसलिए तुम बोल रहे हो इनको ऐड कर दो तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इट्स अ गुड आइडिया, बट रिमेंबर कि कौन सी मेथड है ये, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एडिंग, Adding equation 1 and 2. 33x minus y is equal to 136 plus 3x plus y is equal to 8। क्या करेंगे अभी? सर हम y के जो प्लस है उसको माइनस कर। नहीं बेटा, वो नहीं करते हम, हमने ऐड किया है। वी हैव सॉरी वी सॉरी हैव सर। एडेड, सो वी डोंट हैव टू चेंज साइन। जब यहाँ पे माइनस रहता है ना, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देन वी चेंज साइंस ऑफ द टर्म्स व्हिच आर in the lower part, okay, but we don't do that in adding। एडिंग में सीधा ऐड करते हैं, तो 33x प्लस 3x कितना होगा? 36x। ओके, माइनस वाई प्लस वाई क्या होगा? सर 0। कैंसल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 0। 136 प्लस 8, 144। सो 36x इज इक्वल टू 144। x क्या होगा? 144 divided by 36. व्हाट इज दैट? 4. 4. चलो x तो आ गया, नाउ व्हाट? क्या स्टेटमेंट होगा अब? Substituting x is equal to 4 in equation 2. वेरी गुड, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में नहीं कर सकते? सर कर सकते कर सकते हैं, लेकिन इसमें से जो छोटा इक्वेशन है, जो सिंपल इक्वेशन है, वो इक्वेशन 2 है। दैट्स व्हाई वी हैव चोजन इक्वेशन 2। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट। इन द प्लेस ऑफ x आई एम गोइंग टू पुट 4,
ठीक है. So y is equal to 8 minus 12. So y is equal to minus 4. Correct? Yes, sir. Great. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है. तुम लोग का स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है? 8:30. अच्छा, ओके. ठीक है, अभी तो टाइम है अपने पास. चलो, who will help me? Let's see. नियति. Niyati, I want your help. Yes, sir. Can you tell me how to solve this? Yes, sir. Yep. First, we will take 1 upon x as another variable. I didn't get Which, you. let 1 upon x is equals to v. Oh, you mean to say that Subs- okay, because x is in the denominator. yes, sir. Okay. Let 1 upon x is equal to V. v. Yes, sir. Or any other variable. Okay. And 1 upon y is equal to u. Okay. So from there we will get av minus bu plus 0 is equals to 0. Very good. Okay, so we'll take it as equation number 1. Chalo, next. No, sir. Yep. I have not taken it as equation number 1. What I didn't get you. What you said? I have not taken it as equation number 1 Why? because then I have solved it using cross multiplication. You have solved what using cross multiplication? The whole sum. But then you have to name the number the equation, na? So what is equation 1 for you, like? Because even for cross multiplication you need to solve you need to give numbers to the equation, na? Because in cross multiplication equation the coefficients of equation 1 will get the numbers a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना? Yes, sir. Yeah, so should I give it number 1, equation number 1 or not? Okay. अच्छा, okay. ठीक है, okay. चलो अभी next equation let me write over here. ab square by x plus a square b by y is equal to a square plus b square. So the same rule, the let 1x is equals to v and y 1 upon y is Okay, equals to so that I 0. have already written, so I can write it as ab square v V. minus a square b u is equal So to, plus a square b. oh sorry, plus is equal to a square plus b square. Thank you for correcting my mistake. Tell me अभी आगे क्या करना है? We ab square v plus a square bu minus bracket a square plus b square. Why? So to bring it in that अच्छा, that one. As in that one, ax plus bx plus oh c okay. and I get it. 0. So what you mean to say is, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, but yeah, what you mean to say I understand now. You mean to say that we write it as ab square v plus a square bu minus, see I'll put it in bracket, okay, a square plus b square. Yes, is equals to 0. Correct. So can you tell me what is a1? Very interesting, because you want to solve it by the method of cross multiplication.
and that will give us new insights on this. Very good. Chalo, A1. Can you tell me the value of A1? So A1 will be AV, A. Just A. A. Just A. Yes. Right? Yes, sir. B1 B. minus B. Minus B. Yes, sorry, sir. Minus B. C1. 0. A2. AB square. Very good. B2. A square B. Everyone please pay attention because ये थोड़ा सा complicated question है, and then we are using it by cross multiplication method. So तुम्हारा cross multiplication method भी revise हो रहा है, थोड़ा सा देना please. C2. A minus A square plus B square. Very good. Minus of A square plus B square. Absolutely correct. Okay. So can you tell me the formula for cross multiplication? X upon X upon uh, B1 into yes, B1 into C2. B1 C2 minus B2 C1. B1 C2. Yes, yes. सही है ना? Yes, sir. भूल गई फॉर्मूला? नहीं नहीं सर, याद है. अच्छा ठीक है, बताओ. Y upon A1 A1 C2 minus A2 C1. करेक्ट है? Is it correct? Can anybody else confirm this? Can you on the fan? No, no, no. Light is gone. Light गया है. Two. 2 points. Thank you. Hello, can you hear me? All of you? yes sir. I just got disconnected. Wait, I have to share my screen again. Yes, back on the formula. Chalo, Niyati, please help me with the last part. Is equal to 1 upon Hmm. A1 into
A1 into B2 minus A2 into C1. Mhm. Sorry, Niyati, you need to memorize the formula. yes, sir. Can anybody else help me with the formula? Only the formula part. A2 B1. B1. Sorry? A2 B1. And can you please confirm that whatever formula I've written, whether it is correct or not? You can look into your textbook if you don't remember this formula, and please confirm to me whether it is correct or not. Is it correct? I'll show you again. Is it correct? Yes, Oh, sir. finally somebody. ठीक है, it's correct, then we'll go ahead. Yes, sir. तो इसके बाद क्या करना है, देखो प्लीज ध्यान से देखना यहाँ पे. X upon नियति, you are there with me, right? Okay, Yes, sir. B1C2. Can you tell me, Niyati, what is B1C2? Sir, but we have substituted 1 upon x by uh, Yeah, b. so we'll So, find the value of V and U, na? हाँ, don't worry yes, about sir. it. अभी तो सही जा रहे हैं हम लोग. We are finding the value of V and U. हाँ, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे जो X और Y लिखा yes. है ना, उसकी जगह पे U और V भी लिख सकते हैं. This is your standard formula. I'm just going to change this for the sake of. Yes, please. Sir, sir, in the y, it's C1A2 minus C2A1. C1A2 minus C2A1. I thought that. C1A2 minus C2A1. अभी सही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. बहुत लोगों को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला याद नहीं है, इंक्लूडिंग मी. लेकिन मुझे तो एग्ज़ाम देनी नहीं है. एग्ज़ाम तो तुम लोगों को देनी है. तो प्लीज़ ये प्लीज़ लर्न कर लो यार, ऐसे मत करो. ठीक है. So there will be V here. B1C2. Can you tell me, Niyati, B1C2? Minus b into minus a square plus b square. Okay. Minus, I'll put a bracket. A square b, B2C1. A square B. a square into 0. Okay. Is equal to U upon C1A2, Niyati. A into minus a square into, plus b square. No, C1A2. Yeah, sorry. Wait. 0 into AB square ab square, minus C2A1. a into, नहीं, minus of A sorry, square plus B square minus a square plus b multiplied square by into a is equal to 1 upon A1 B2. into a square b. A cube भी लिख दूं? Yes, sir. A2 B1 minus ab cube. minus
AB square into B. Correct. That is minus AB cube. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So let's simplify this further. Now I want somebody else. Just a moment. Ahmareen. Ahmareen. Ahmareen, are you sleeping? Yes, sir. Please get on your No, cam. sir. Okay, great. Yes, Ahmareen, please tell me आगे क्या करना है? Sir, we'll open the bracket of like we'll multiply b into a square plus b square. Okay, so this minus minus will become plus, right? Yes, sir. And b multiplied by a square plus b square. Can you tell me the answer? A square b Hmm. plus b cube. Very good. Minus 0, because Yeah, anything multiplied by 0 is 0. So that's 0. it. Okay. U upon. Can you tell me the answer? 0 minus. Okay. So here, see, 0 minus, and this term will be in minus only. The whole term. This whole thing will be negative, right? Yes, sir. And we have a minus sign and we have a 0. So can we write the only the bracket part after multiplication in positive? Yes, sir. We can do that. Okay, can you tell me what is the answer? A cube plus b square a. AB square. ab square Okay. Yes. Tell me about this. plus ab cube. Okay. What is V now? How to find V, beta? Sir, just a moment. I forgot the formula. No, there is no formula. Look here, look here. Don't search for anything. Sir, that method. I'll tell you the method, na? If you've forgotten, don't worry. I'll tell you. See, what we do is we take this first bracket and we equate it with the third bracket. ठीक है? Yes, sir. So a square b plus b cube equals 1 upon a cube b plus ab cube. So v is equal to a square b plus b cube upon a cube b plus ab cube. Now you understand? Yes, sir. Okay, uh, anything is possible for simplification further? No, Yes, sir. it is possible, beta. We can take out something common, na? From the numerator, if we take out, Yes, sir. We can tell me. a square plus b square. Very good. अब नीचे क्या बचेगा बताओ, वैसे ही कॉमन निकालना. ए भी कॉमन निकाल लो. क्या बचेगा अंदर बताओ, a square plus क्योंकि ए तो ab बाहर square. चला गया. b square. Now see, this a square plus b square and a square plus b square will get cut, and b will get cut, है ना? So 1 upon a will Yes, be the sir. answer, right?
So V is 1 upon Yes, A. sir. V is 1 upon A. That means, what is V? In the beginning of the question, yes. So we took 1 V as 1 upon upon X. X. So we will re-substitute the value of V, which is 1 upon X, which is 1 upon A. And therefore, X is equal to A. Right? Okay. Everybody, did you Yes, sir. understand this? This was a complicated question and we chose the method of cross multiplication. But it looks complicated initially. If you remember the formula, if your steps are correct, it is the easiest method. If you try to solve this question by the method of elimination, you will go crazy. Don't try that. That's huge. Okay, it's not yet over. Thank you, Ahmareen. Thank you for your help. We'll take help from someone else now. Yes. Let's see who has not got the chance. Gia Ralph, good morning. Good morning. Good morning. How are Yes, you? sir. Good morning, sir. You don't sound fine. I'm fine, sir. You sound like you're tired of lockdown and all. You want the school to open very fast, है ना? No, why? Everybody No, wants schools to open here. Why you don't want? It will I be. It feel will it be. will For be sure it will be. hectic. But it can be managed here. Don't give up so easily. Okay, chalo. Help me to find U. Help me to find U. क्या बात है? Yes, yes, please. Yes. So Sir, what I've done is I've equated the second fraction with the last one. That's what we do, right? अगर V ढूंढना है तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो और अगर U ढूंढना है sir, तो can you hear me? सेकंड और थर्ड को इक्वेट करो. चलो इक्वेट तो यहाँ पे करके दिखाया मैंने. Now what? Sir, Sorry. am I? Yes. GR Ralph, can you hear me? GR Ralph, you're there? I can't hear you, Gia. Gia, you can re-log in again. कुछ तो issue है. Siddhi Pimple. Chalo, help me. Please help me with this problem. So what should I? Yes. Hmm. U Hmm. U is equal to A square, A Mm-hmm. cube plus AB square Hmm. by A cube B Okay. plus Can we AB cube. simplify it further? Yes, sir, we Okay. And can we'll be take left with, A as common. okay, the A whole upon. square plus B square. Mm-hmm. AB, we can take AB as common and then A square plus Okay. B square. Now this will cut. A will cut and will be left with. Yes, sir. A plus But U is equal to 1 by U is 1 by Y. So 1 by Y is equal to 1 by B and therefore Y is equal to B. Correct? Great. Yeah, so yes, nice sir. question this one. तो even this can be solved. ऋषि, ये वाला मैं नहीं कर रहा हूँ.
इसमें तेरे को 1/x और 1/y को a और b लेके आगे सॉल्व करना है। ऋषि कर लेगा ना तू? ऋषि ये सॉल्व करके ना तू मेरे को भेज, ठीक Yes, है? sir. यू सेंड इट टू मी, फिर मैं उसमें कुछ अगर गलती रहेगा आई विल करेक्ट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज Okay, गोइंग टू sir. हेल्प मी? हु हैज नॉट गॉट चांस? काफी लोग हैं। अदनान, अदनान you're there? Adnan, you're there? कौन है ये? कौन सुबह सुबह चाय बना रहा है? जिया you're there? Okay, 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 great. चलो चलो, जिया Yes, you help. yes, sir. Sir, can you Yes, I repeat can. what we did to Actually, find I've U? recorded it, but still I can show you. See, what we did to find u was we equated the second and the third fraction. Can you see in the screen? Yeah, so this is the method. We Yes, sir. equated the second and the third fraction, and we took the denominator of the second fraction over to the other side, multiplied it with 1, took out common, simplified, and we found u as 1 by b. But since u was 1 by y, so 1 by y is equal to 1 by b, and therefore y is equal to b. Right? Chalo, Jia, you only help me, Jia, Yes, with this sir. word problem. I don't know if you can read it or not, some fifth question. I'm just going to read it for you and tell me what should I write. We'll just make the equation and leave it, okay? The difference between two positive numbers x and y such that x is greater than y is 4. Can you get the first equation out of the first statement? Difference between two positive numbers x and y such that x is greater than y is 4. Can we make the first equation? Let first positive number be x and second y. X. So first equation will be x minus y is equal to Perfect. 4. And the difference between their reciprocal is 4 by 21. 1 upon Why y did you minus say 1 1 upon upon y x. minus 1 upon Uh, x? It should be 1 upon x minus 1 upon y, na? Which is correct? This one or this one? so They are saying and the difference between their reciprocal is 4 by 21. So we have to, sir, because yes, x is yes, greater yes. than y, So if so x is then greater than y, एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें. 5 is greater than 2, right? अगर 5 2 से बड़ा है, दोनों को रेसिप्रोकल yes, करके sir. कंपेयर करते हैं, क्या होगा? I get 1 by 5 here and 1 by 2 here. Now which is greater? So if you don't know how to compare, you can just convert them into decimals. ठीक है? So this will be 0.2 and this will be 0.5. Which is greater? 0.5 is greater. That means 1 by 2 is greater. इसका मतलब है जब बड़े नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं ना तो आंसर छोटा आता है और छोटे नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो आंसर बड़ा आता है. The reciprocal of bigger number is smaller and the reciprocal of smaller number is bigger. ये रूल है.
ये अरिथमेटिक का रूल है ये। समझा? ये लॉजिक समझ में आया तुमको? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? क्या हो गया? वेयर इज जीआर आल्फ? ओके ओके ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस Sir, लॉजिक? I'm here only. हाँ, मैं यही सुन रहा था। अच्छा, ठीक है Yes, ठीक है sir. ठीक है ठीक है। तो इजी हो गया ना। अभी हमको पता है कि जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/y विल बी ग्रेटर। सो डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल जब निकालना है तो 1/y पहले आएगा और फिर 1/x आएगा। ठीक है, एंड दैट इज 4/21। लेकिन मुझे ये जानना है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। हाउ विल सिंप्लीफाई दिस? फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, विच मेथड विल यूज टू सॉल्व दिस? Am I audible? Great. So can you Yes, tell me sir. which method will I Yes, sir. use to solve this? Tanisha Mohanan, Sir, can you please help me? Yes, sir. Sir, I we'll think we should not. take out the LCM. I think we should directly use elimination by substitution. Don't you think that is easy? See, I'll tell you how. We'll take the first equation, x Can minus y is equal to 4, and we'll find the value of x. That is y plus 4. X is equal to y plus 4. Now we'll substitute x is equal to y plus 4 in equation 2. ठीक है? So 1 by y minus 1 by y plus 4 is equal to 4 by 21. Isn't it easier to solve this way? Can you tell me, Tanisha Mohanan, yes, sir. how to go ahead? How to go ahead with from Yes, this sir. situation? क्या करेंगे आगे? Sir, No I've problem, done no it problem, no by problem. You just tell taking out me the from this LCM. method. Help me out. I'm sure you have done it, but let's proceed from this situation. ठीक है? तो मेरे को सजेस्ट करो कि मैं क्या करूं अब आगे, इसके Yes, आगे sir. क्या करूं? See, what I think is, अब मैं LCM लूंगा तो इजी हो जाएगा. So this will be y plus 4 will be multiplied here and y will be multiplied here. Okay. So what will I get? Y plus 4 minus y the Why? whole upon y bracket y plus 4 is equal to 4 by 21. सही है? ये करेक्ट लिखा है. Okay, so y and minus y will get cancelled. Yes, sir. So 4 upon y bracket Yes, sir. y plus 4 the whole upon 4 by 21. Is it correct? Is it- अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप बताओ मेरे को. Yes, sir. We'll Sir, cut the हम 4 na both the side and we'll write 1, है ना? And then we'll cross yes, sir. multiply. So Then y 21 plus is equal to y bracket y plus 4. So 21 is equal y to plus y 4. square plus 4y. So y square plus 4y minus 21 is equal to 0. अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है.
एंड आई अंडरस्टैंड कि क्यों ये क्वेश्चन में लोगों को डाउट आता है. So what we have got over here is, and everyone should listen and focus here, y square plus 4y minus 21 is equal to 0. This is something new. This is not linear equation in two variable. In fact, this is not linear equation also. You know what is this equation known as? किसी को पता है ये equation को क्या बोलते हैं? Exactly. This is quadratic equation. And for solving quadratic equation, what you do? You do splitting the middle term. What do you do? Splitting the middle term. Okay, cool. So minus 21. Two factors of minus 21 so that I can get plus 4. So 7 3s are 21. I know 7 and 3's difference will give me 4. Okay. But I want plus 4. So I will give my bigger number plus sign. And here minus sign. So I will confirm now. Plus 7 multiplied by minus 3 is minus 21. Correct. Plus 7 minus 3 is plus 4. Correct. Okay. So y square plus 7y minus 3y minus 21 is equal to 0. Right. Now y bracket y plus 7 minus 3 bracket y plus 7 is equal to 0. So y plus 7 bracket y minus 3 is equal to 0. Therefore, y plus 7 equals 0 or y minus 3 equals 0. Please note this step. क्योंकि अब तक हमने splitting the middle term तो किया था, लेकिन equate 0 से equate करने के साथ नहीं किया. तो ये वाला step बहुत important है. यहाँ पे हमें factorization तो हो जाता है quadratic equation का. बट देन आगे क्या करना है? आगे y की वैल्यू ढूंढनी है. सो कैसे ढूंढना है इसको देखो प्लीज. प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0. दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, मतलब वो दोनों टर्म्स 0 होगी. या तो फर्स्ट टर्म 0 है या तो सेकंड टर्म 0 है, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 है या तो सेकंड ब्रैकेट 0 है. मतलब या तो y प्लस 7 0 है या तो y माइनस 3 0 है. राइट. So y is equal to minus 7 or y is equal to 3. हमें दो आंसर आ रहे हैं. So we'll just check with the question. What the question says. The question clearly mentions that we are talking about two positive numbers. Do you see that? Yes. So when we are talking about two positive numbers, we will reject the negative number, na? We will not take y as minus 7. Which number we will accept? Y is equal to 3. So that is our number. So substituting, that is our one of the number. Okay, substituting y is equal to 3 in let's check the equation. Equation number 1, x minus y is equal to 4. Equation number 1, x minus y is equal to 4. So x minus 3 is equal to 4. So x is equal to 4 plus 3. So x is equal to 7. So y is 3 and x is 7. X is bigger, y is smaller. Right? Did you understand the whole method? Yes, sir. What about everyone else? Yes, sir. चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कुछ Yes, बातें sir. करते हैं. कैसा लग रहा है लाइव क्लास? मुझे तो बहुत बोरिंग लग रहा है. आई रियली, इफ यू आस्क मी ना, हाँ ये मैं लाइव क्लास ले सकता हूँ टू इंटरैक्ट विद ऑल ऑफ यू, बट टू टीच इन लाइव क्लास
इज सच अ बोरिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरी जो स्पीड है ना, जिस स्पीड से मैं जनरली सिखाता हूँ, it has become 1/4 in live class, because in the middle I have to ask you, can you hear me, can you tell me, ये सब मेरे वीडियो में कहाँ होता है, वहां तो मैं फटाफट आगे जाता हूँ। ये मैं समझाने की कोशिश बहुत लोगों को करता हूँ कि मुझे जब सिलेबस कंप्लीट करना है तो आई कैन नॉट डू इट इन लाइव क्लास, होगा ही नहीं, खत्म ही नहीं हो पाएगा। लाइव क्लास इंटरैक्शन के लिए होना चाहिए, व्हेन आई टॉक विथ यू। जब मैं ये डाउट सॉल्विंग के लिए भी सही है, बट डाउट सॉल्विंग में भी कितना टाइम लग रहा है, अभी भी कुछ डाउट्स बचे हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गो देयर। तुम्हारी स्कूल कितने बजे, अगेन टेल मी दैट। Oh, so by 8:15 तो 8:30. we have to wind up. 8:30. ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वी हैव ऑल द टाइम। मैं तो 9 o'clock तक भी ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू गाइज हैव स्कूल, आई नो, मैं नहीं लूंगा ऋषि, डोंट वरी। ऋषि इज नॉडिंग, डोंट ऑफ योर कैम मैन। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस आई फाइंड। बहुत स्लो हो जाता है चीजें, मतलब ऐसा स्लो मोशन में चली जाती है लाइव क्लास में, एंड मेनी पीपल आर स्लीपी। Morning classes are like that, yeah, Urmi ma'am is telling. So, yeah, but I wanted all of you to get up in the morning and do some PCM, physics, chemistry, mathematics, no matter how boring or difficult that sounds. But that is the right way, I think. सुबह सुबह जो करते हैं, एटलीस्ट पूरा दिन वो तुम्हें हॉन्ट करता है। तो सुबह अगर मैथमेटिक्स करोगे तो सबसे बेस्ट है, पूरा दिन उसके ही सपने आएंगे तुम्हें, डे ड्रीमिंग। Okay, let's go ahead. ठीक है, ये आई थिंक 2 लास्ट डाउट्स है, समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। 90% एसिड सोल्यूशन, 90% एसिड सोल्यूशन मीन्स वो लोग ने लिखा है ब्रैकेट में 90% प्योर एसिड एंड 10% वाटर, एंड 97% एसिड solutions are mixed to obtain 21 liters of 95% of acid solution. How many liters of each solution are mixed? तो इधर हिंट में दिया ही है वो लोग ने, बट स्टिल विल राइट। लेट solution A be of X liters and solution B be of Y liters. Solution A X liters, solution B Y liters. Okay, so we are getting 90% of acid solution, pure acid, and 97% of acid solution, and we are mixing them, and we are getting 21 liters of 95% of acid solution. See, the first equation will be x plus y is equal to 21. X plus y is equal to 21. Do you know why? Because दोनों solution का जो combined volume है, that is 21. The combined volume of both the solution is 21. That's the first equation, सबसे easy. Second वो लोग ने hint में दिया है, बहुत अच्छे से दिया है ये, कि अगर मेरे पास फर्स्ट सोल्यूशन में 90% एसिड है, सेकंड सोल्यूशन में 97% एसिड है, और मिक्सचर में 95% एसिड है, तो मैं वो एसिड की क्वांटिटी को ही मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, कैसे? देखो,
फर्स्ट सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो x लीटर है, x लीटर में से कितना एसिड है? 90%। ठीक है, सो 90% ऑफ x, ये हो गया एसिड, एसिड की क्वांटिटी है। सेकेंड सोल्यूशन में कितना एसिड है? 97%, 97% ऑफ y, तो मुझे मिलेगा 95% ऑफ एसिड एज अ रिजल्टिंग मिक्सचर। लेकिन रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है? रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम है 21 लीटर्स, 21 लीटर्स। ठीक है, सो आई विल गेट 95% ऑफ एसिड सोल्यूशन, दैट इज 95% ऑफ 21। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है? सो 90% मीन्स 90/100 ऑफ मल्टीप्लीकेशन x प्लस 97/100 मल्टीप्लीकेशन y इज इक्वल टू 95/100 मल्टीप्लीकेशन 21। ठीक है, 0 0 कट, 5 19 जा 5 20 जा, सो ये हो जाएगा 9x/10 प्लस 97y/100, ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, इज इक्वल टू 19 टाइम्स 21/20, इस ये भी और सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक एलसीएम थ्रू आउट एंड सिंप्लीफाई। सो अगर थ्रू आउट एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 आएगा। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 5, हियर आई एम गोइंग टू राइट 1, and here I'm going to write 10. So this will be 90x plus 97y is equal to 5 times 19 times 21, the whole upon, actually the whole upon ऐसे नहीं लिख सकते हम। this side upon 100 and this side upon 100, और ये 100 100 सीधा कट हो जाएगा। ठीक है, कैन यू हेल्प मी विथ द RHS मल्टीप्लीकेशन? यहाँ पे तो 90x प्लस 97y ही होगा। 19 5 95, 95 टाइम्स 21 कितना होता है? 1995। 1995. Are you sure? Can anybody confirm this, please? Okay, great. So this Yes, is your sir. second equation. ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है। समझ में आया तुम्हें? हिंट में यही दिया है, बट मैंने उसको और सिंप्लीफाई करके सेकेंड इक्वेशन दे दिया। नाउ यू कैन सॉल्व बोथ द इक्वेशंस बाय एनी मेथड and find the value of x and y, that is the quantity of solution A and solution B. Is it clear? Great. Yes, sir. Okay. Work, time and work वाला problem है। Yes, anybody else? कुछ बोलना है आपको, बोलो। कोई कुछ बोल रहा था, I don't know. Okay, shall we move to the next question, please? Last question. Pooja and Ritu can do a piece of work in 17 1/7 days. If 1 day work of Pooja be 3/4 of 1 day work of Ritu, in how many days will each do the work alone? कैसे मैं स्टार्ट करूं, बताओ इसको। इसका ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन जब किए थे मैंने बहुत अच्छे से बताया था। कैन यू टेल मी द ओपनिंग स्टेटमेंट, एनीवन? चलो, कोई नहीं बता रहा है। मैं चूज करता हूं किसी को। कौन है? हाँ, अक्षता, यू डिडंट गेट चांस ना। अक्षता, कैन यू हियर मी? I can also hear you. Let's do it Yes, this, sir. Akshata. What should be the opening statement? Can you tell me? Okay, Let let Pooja's 1 day 1 day work be 1 work upon x of Pooja of Pooja. be
No. I'm sorry. I don't agree with that. I'm going to write it in a little different way, and then I'm going to come to what you told me. So I will say, let Pooja take X days to complete the work. Do you agree with this? Because that's what they have asked, na? They have asked, find in how many days each will do the work alone. So let Pooja take X days to complete the work alone. Actually, I should also write alone. And let Ritu take Y days to complete the work alone. Yes, Akshata. After this, what will I write? No. Then Therefore, x one plus day's y would work of Pooja is equal to 1 by x, and 1 day's work of Ritu will be 1 by y, right? Or you can write therefore Pooja will in one day Pooja will do 1 by x of the work, and Ritu will do 1 by y of the work. Okay. After this, now we can say 1 upon x plus 1 upon y would be 17 1 upon 7 days yes, or right. 7 upon So one more 120 days. statement to add before whatever you said. It's absolutely correct, but one more statement I'm going to add. Small statement. Uh, both working together take 17 1 by 7, which is, can you tell me the improper fraction of this one? No, 120 Yes, upon 7. so it's 7 upon 120. 17 1 by 7, yeah. Both working together take Yeah. 120 upon 7 days to complete the work. Right? Therefore, Yes. working together in one day, both will complete how much work? Working together in one day, both will complete 1 by x plus 1 by y of the work. 1 by x plus 1 by y of the work, which is equal to 7 by 120 of the work. Actually, I should write here only, both will complete 7 by 120 of work. So this is 1 day's work of Pooja, 1 by x, 1 day's work of Ritu, 1 by y. If they are working together, they are doing 1 by x plus 1 by y of the work in one day. And yes, who is that? Yes, sir. Good morning. कोई तो एक नया आवाज सुनाई दिया मुझे. 7 by 120. 1 by x plus 1 by y is equal to 7 by 120. So that is your equation number 1. Okay, there is one more equation which can be formed. If 1 day's work of Pooja is 3/4 of 1 day's work of Ritu. Can you help me, Akshata, with this? Yes. Yes. Then 1 upon x would be equal to 3 Correct. upon 4 into 1 So upon 1 upon 5. x 1 is upon y. equal to 3 by 4y. So 4y is equal to 3x,
और 3x minus 4y is equal to 0. Equation number 2. Correct? So we got both the equations. Now Yes. solving further is not a big deal. ठीक है, ये मुझे यश ने पूछा था. यश, डाउट क्लियर हुआ बेटा? पक्का? Yes, sir. ओके. सो आई एम श्योर Yes, कुछ sir. और भी डाउट्स होंगे, किसी ना किसी को तो कुछ और डाउट्स होंगे. ऐसा नहीं है कि सारे डाउट्स हो गए हैं, बट अपना आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हारी स्कूल भी है.